to their respective places. I'm requesting you. That is the ruling of the chair. So please go back to your chairs. Please go back to your seats. I'm requesting you. I'm requesting all members to please go back to your seats. You go back to your seats. I'll allow the point of order. That is why I'm requesting all the honorable members. Please go back to your seats. I'm allowing a point of order. Please request all the members to go back to your seats. I'm requesting all the honorable members to go back to your seats. I'll allow the point of order. Will you go back to your seats? Please go back to your seats. Please go back to your seats. Allow your point of order. I'm ready to allow your point of order. Please go back. Please go back to your seats, allowing your point of order. I'm only requesting you, honorable members. You see, I have placards on me. Thereafter, you ask me to a point of order. How was this? Please. You go back to your seats. I'll allow the point of order. You go back to your seats. Allow the point of order. No, if you don't go back to your seats, I can't allow the point of order. I'm sorry. Shri Mahesh Jethmalani ji, please continue. Please continue. Honorable Sir, with your kind permission, I rise above this unseemly din to support the weapons of mass destruction and delivery of systems, Prohibition of Unlawful Activities, Amendment Act 2022. So the genesis of this bill lies in the widespread global apprehensions after 9/11 that weapons of mass destruction could fall in the hands of terrorists and other non-state actors. In response to these apprehensions, the UN, who I hope these gentlemen honor, because this amendment bill is pursuant to our international obligations as laid down, they should at least respect the UN. But sir, in response to these apprehensions, the UN Security Council in 2004 passed Resolution 1540 when it called upon all member states to enact laws for the purpose of prohibiting activity pertaining to weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction being nuclear weapons, other nuclear devices, biological weapons and chemical weapons. So, the other, significantly, sir, the UN Security Council also mandated that member states should take steps towards prohibiting financial activity concerning weapons of mass destruction. Now, sir, pursuant to these obligations, the government of India in 2005, the then headed by the UPA, took steps to enact a bill against weapons of mass destruction. So, by Section 8, and I'll read Section 8, and this is an extremely important bill, and this din is so unnecessary. Sir, they forget international obligations are ignored only for disruption. That is the nature of this opposition. Now, sir, I want to point out a few mistakes, and perhaps that's why they want to shout and disrupt. I want to point out the failings of the 2005 legislation, which their government, some of them or most of them were members of that UPA government. Please take your seats. Please take your seats. Sir, please take your seats. Please take your seats. Everybody standing. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please take your seats. Please take your seats. He's asked for a point of order. He's asking for a point of order. Just 1 second. Please take your seats, honorable members. Please take your seats.
Please take your seats. Okay, okay. Shri Prabodh Tiwari. Yeah, so you have a point of order? Yes, I'm allowing. 259. 259 देखिए ना 25. आप पढ़ लीजिए ना. Senior member, the honorable senior member. Yes, please. सभापति व्यवस्था बनाए रखेगा और अपने निर्णयों को प्रगति के आयोजन के उस सत्र में अनावश्यक समाप्त होगी. एक तरफ आप हाउस ऑर्डर में नहीं है, इधर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाने दे रहे हैं, उधर भाषण करा रहे हैं. ये दोनों चीजें साथ कैसे हो सकती है? जब हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहे हैं, हाउस ऑर्डर में नहीं है, तो अगर हम नहीं उठा सकते तो वो कैसे उठा सकते हैं? Okay, you made your point of order. Yeah, point of order. Rule number. रूल नंबर 259 259. सेम है ना. सर सदन Okay. Yeah, please. सर सदन में शोर है, तमाम सदस्य वेल में हैं और आप बहस करा रहे हैं. 259 सुन लीजिए, रूल 259 बड़ी क्लियरली कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सदन को पहले ऑर्डर में लाएंगे, उसके बाद बहस होगी. हम आधे घंटे से चिल्ला रहे हैं कि हमारी बात सुने, आप हमारी बात भी नहीं सुनते हैं. 259 का पालन करें सर, रूलिंग दें. आप हम सबके चेयरमैन हैं, सिर्फ उस तरफ जो बैठे हैं उनके चेयरमैन नहीं, हमारे भी चेयरमैन. मैं आपको बताता हूं, आपकी पॉइंट मैंने सुन लिया, अब आप मेरी पॉइंट सुन ले. अब बैठे प्लीज. यू मेड योर पॉइंट. It's my responsibility as a chair to ensure the house is in order. It is the responsibility of every member also to ensure that the house runs in decorum. So it's a mutual thing that we have to do together. Thank you. Honorable Shri Mahesh Jethmalani ji. Honorable. One second. Honorable Shri Bhupendra Yadav ji. ऐसा है कि सदन में 267 का विषय उठा रखा है, उसको उठाकर के सुबह से शोर मच रहा है. अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर 259 उठा रहे हैं. कम से कम इतना तो आपको कहना चाहिए कि 258 की जो रूलिंग होती है चेयरमैन की, वो फाइनल होती है. एक बार 258 की रूलिंग फाइनल होने के बाद अगर कोई वेल के अंदर आते हैं, शोर मचाते हैं, हाउस को डिसऑर्डर करते हैं, तो जो बुलेटिन आता है उसमें कम से कम ये प्रकाशित होना चाहिए कि इन्होंने 258 की रूलिंग को नहीं माना. पहले जब हमारे चेयरमैन साहब थे हामिद अंसारी साहब, तब बाकायदा बुलेटिन में ये आता था, ताकि देश को भी ये लगे कि जो लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहे हैं वही उसको नहीं मान रहे. मुझे लगता है ये सदन की एक परंपरा है जिसका आपको पालन करना चाहिए. Sir, I was on what the UPA government in 2005 did pursuant to the UN resolution. The UPA government in 2005 introduced the Weapons of Destruction Prevention of Unlawful Activities Act. So by this act, and particularly Section 8, a number of activities concerned with weapons of mass destruction were prohibited and made punishable. These acts included, sir, acquiring, manufacturing, transporting, transferring, and otherwise dealing with weapons of mass destruction. So the biggest weapon of mass destruction is here, sir. They are the biggest weapons of mass destruction. They will destroy the country, sir. Sir, very pertinently, sir, while the UN had expressly said that member states should also take care to prevent financing, to take care of financing of weapons of mass destruction, the 2005 Act which they enacted contained no provision. We will examine. I ruled. We will examine. I said we will examine. Sir, the 2005 Act did not deal with financing of WMDs, although the UN resolution said it must do so. Now, sir, fortunately, from 2005 to the present date,
we have had no cases under the Weapons of Mass Destruction Act. We have had no cases. So the question of financing didn't arise at all because there were no such cases in India. Now, sir, the present amendment bill, sir, as Mr. Rao has already pointed out, contains three provisions. Three provisions. Please understand, it contains three provisions which you must hear because this is important for your international obligations. Please, wait. So these three provisions basically are incorporated by a new section 12A under the Amendment Act. The first prohibits any financial activity pertaining to weapons of mass destruction by any person in this country. That's clause A of the new bill. Clause B of the new bill, clause B of the new bill. Sir, clause B of the new bill, sir. Sir, clause B of the new bill is a provision which provides for preventive action. That preventive action enables the central government through a designated authority to prevent funds from being used by any person for weapons of mass destruction. It prohibits persons from... And sir, there's a clause C. Honorable members, please There is a clause C. Please, honorable member, please. Sir, shall I yield to him, sir? I will just take a point of order. Manya Shri Shukhendu Shekhar Roy ji, Manya Shri Shukhendu Shekhar Roy, you have a point of order. Shri Professor Manoj Jha ji, yeah, point of order. Thank you, Vice Chair. Please. Sir, my learned member, Which rule? my learned member under 238, subclause 1 and 2. My learned member, my colleague, Mahesh Jethmalani ji made a reference that we are destroying the country. The people who are opposing here in the well, they are destroying the country. Sir, this is too far. We love this country. We love this country no less than you. We will examine this country. And we will examine it. Sir, this should be expunged. We will examine anything that is not supposed to be there, will not be there. This should be expunged. We are not destroying the country. We are the co-creators. I've taken your point. Please don't say that we are destroying the country. Please. Professor Jha, I've taken your point. No, Dr. Sivadasan ji, please. Professor, please, one second. Sir, Professor, this should be expunged. Shukhendu Shekhar Roy ji, John Vitas ji, please sit down. Shri Jethmalani ji, please take your seat. Shri Jethmalani ji, please take your seat. Take your seat, please. Shri Shukhendu Shekhar Roy ji, your point of order. Please, Jethmalani ji, Mani Jethmalani ji, please. John Vitas ji, बैठे. नहीं, Dr. Sivadasan ji, no. Please sit down. Shri Shukhendu Shekhar Roy ji. Sir, Rule. I respectfully submit that under Rule 238, Sub-Rule 2, it says the member while speaking shall not make a personal charge against a member. Here, while speaking, the honorable member has not only made a personal charge against a particular member, but all the members who were here by saying, and I quote, that these are the weapons of mass destruction, and not once, twice he repeated, I heard, that must be expunged. I'm giving the ruling, we will examine what is not supposed to be there, will not be there. We will examine. I'm giving my ruling, whatever will not be there, will not be there. Yes. Shri Mahesh Jethmalani ji, please conclude. Shri Mahesh Jethmalani ji, please conclude. May I continue, sir? Please conclude. मैं पहनता हूँ एक मिनट ताकि मैं उनको नहीं सुनूं। Sir, we'll have to conclude. No. I'll have to conclude him. No. So I was coming to the present. After him. Not now. No, please. The present amendment bill, sir, has three provisions.
essentially, there's only one section, 12A, a new section. It's a short amendment bill. It contains 3 provisions. The first provision, sir, is the prohibition by any person of any financial activity pertaining to weapons of mass destruction. The second is a preventive, B, is a preventive measure so that the central government through a designated authority can take steps to prohibit any person from financing, and they can attach funds or any economic assets which are likely to be used for weapons of mass destruction. The third subsection of 12A, sir, is a wider net. It enables the central government to prevent any banks or financial institutions or any third parties from funding activity concerned with weapons of mass destruction. These are the broad 3 provisions which under 12A the new bill seeks to enact and implement. Now, sir, the amendment seems to be a response by our government to 2 international institutions. The first international institution is the UN Security Council. When the UN Security Council passed Resolution 1540 in 2004, it ordained and it contemplated a comprehensive review from time to time of the working of the 1540 resolution, as also any gaps in its implementation. In 2016, there was a review, one of these reviews, in which the UNSC, the Security Council, found that there were indeed gaps and financial activity had considerably increased pertaining to weapons of mass destruction because of advanced technology. Particularly, they noticed that the delivery systems for weapons of mass destruction, such as drones, and also the use of biomedical labs for pathogens. These were 2 areas for which the monitoring of financial activity for funding these activities, drones for delivery of WMDs, and also biomedical labs, unauthorized, these used for creating pathogens. Also, the FATF, the Financial Action Task Force, has also recommended stricter financial controls, and the bill is therefore a response to that. So apart from that, this bill is extremely important from a national security point of view. We are a country that has been living with a long experience of terrorist activity in our neighborhood, as also proliferation of weapons of mass destruction. Accordingly, our own security interests demand that we strengthen global efforts, not just out of an obligation, but for our own security. We strengthen global efforts to prevent the proliferation of weapons and make our own territory and our neighborhood safe and secure. Lastly, sir, I want to point out a very important provision. Sir, the bill has no provision. While it prohibits these activities, it has no provision for punishment of these activities. The idea seems to be that you take recourse to the 2005 Act. Now, I only want to say 2 things. The 2005 Act has 2 sections. Conclude, Sir, Jetmalani ji. just 2 minutes. 1 minute, not even 2 minutes. Sir, the 2005 Act has 2 sections, 17 and 19.
has two sections, 17 and 19, which both provide for punishment of other provisions for which no specific punishment is provided, such as the one in our bill. Now, sir, in my respectful submission, the 2005 Act may need to be revisited. This bill has to be passed, but the 2005 Act may have to be revisited so that the Section 19 is deleted. And so, one last statement, sir, which perhaps my learned friends would be well advised. So one last statement, and that is, sir, that there's an anomaly in this. There's an anomaly in the Act which also needs to be rectified. So the people with financial activity, people who are involving in financial activity for weapons of mass destruction should face the same punishment, and therefore these people, sir, should face the same punishment as others under the Parent Act under Section 8. I am grateful, sir, and I strongly recommend the introduction and implementation of this bill. सिकंदर कुमार, डॉक्टर सिकंदर कुमार। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया में जो टकराव का माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, और एक और रशिया और यूक्रेन के बीच में न्यूक्लियर वार का खतरा बनता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया का यह आरोप लग रहे हैं कि वह यूक्रेन के खिलाफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिन्हें कि हम WMD, जिन्हें सामूहिक विनाश के हथियार भी कहा जा सकता है, का इस्तेमाल कर सकता है या कर रहा है। एक तरफ भारत ने अपने उस कानून को जो 2005 में बनाया था, उसको ज़्यादा मजबूती करने के लिए और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए ये अमेंडमेंट लाई है। महोदय, आप जानते हैं कि किसी भी देश में आतंकवादी गतिविधियों के कारण कई लोगों के अपनी जानें चली जाती हैं, और हमारे देश भारत में भी बहुत से लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों के कारण अपने प्राण खोए हैं। इससे देश में एक भय का वातावरण बना है, जिस पर काबू करने की जरूरत है। महोदय, जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो पूरा दिन काम करके थका हुआ अपने घर को जा रहा होता है, और अचानक बिना किसी धमाके के, बिना किसी आवाज़ से, बिना किसी आग से, बिना किसी धुएं से अगर सैकड़ों लोग मर जाएं और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं, और बस इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में देखने को मिलती हैं। जैसा कि टोक्यो में गैस लीक होने से वहाँ ऐसा हुआ, एंड इट वाज ए टेररिस्ट अटैक। और ये तो शुक्र है कि वहाँ पर जो केमिकल यूज किया गया वो बहुत पुअर क्वालिटी का था, अगर वो अच्छी क्वालिटी का होता तो वहाँ पर तबाही मच जाती। इसी तरह 9/11 अमेरिका पर जो हमला हुआ, अभी अमेरिका उससे उभर ही रहा था कि लोगों के घरों में लेटर आने शुरू हुए, और जो उसे खोलता था वह मर जाता था, क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल था, जैसे उस लेटर को खोला जाता था व्यक्ति बेहोश हो जाता था और वो मर जाता था। ऐसा भारत में भी हो सकता है, और इस संसद के बाहर भी वर्ष 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था। जब भी टेररिस्ट के हाथ वेपन्स आते हैं, वे उनका दुरुपयोग करके भारत में, चाहे वो संसद हो या मुंबई या दुनिया का कोई और देश हो, आतंकवादियों द्वारा इन वेपन्स का इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और ऐसे में देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और इसलिए अब ऐसे वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। और जो हमारे देश में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय का भाव है, उस भाव के साथ माननीय विदेश मंत्री जी ने WMD अमेंडमेंट बिल 2022
जो इस सदन में लाए हैं, या जो WMD अमेंडमेंट बिल 2022 आया है, या इस देश को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है। और मैं विदेश मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लेकर बिल पेश किया, और मैं चाहता हूं कि दुनिया में शांति और सुरक्षा का निर्माण करने के लिए भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2005 में 5 के 17 साल पुराने कानून में पहली बार संशोधन लाया गया है, और इस बिल के माध्यम से सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन वेपन जैसे न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और अन्य उपकरणों के गैर कानूनी उपयोग पर अंकुश लगाने का काम होने वाला है। महोदय, 2005 का जो कानून था वह बहुत ही सीमित था, क्योंकि वह सिर्फ वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करता था। जो मैन्युफैक्चर करेगा उसके ऊपर कानून लगाया जा सकता है, लेकिन क्या सरकार इंतजार करेगी कि जब तक पूरा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर हो तभी उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर सके? तो उसमें तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वेपन्स की प्रोलिफरेशन की बड़ी संभावनाएं रहती हैं, और इसी कारण से आज यह अमेंडमेंट इस बिल के अंदर लाया गया है। महोदय, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे वेपन्स को कौन फाइनेंसिंग कर रहा है, कहां से फाइनेंसिंग हो रही है, उसको पकड़ा जा सके और उसको रोका जा सके, इसलिए आज यह वर्ष 2005 के एक्ट का जो अमेंडमेंट आ रहा है उसके अंदर मुख्य बात यह भी है कि जो ऐसे वेपन्स को फाइनेंस कर रहा है और जितने भी ऐसे वेपन्स के फाइनेंसर होंगे उनके ऊपर कार्रवाई हो सके, उनको कानून के अंदर लाया जा सके। और अब इसके जितने भी फाइनेंसर होंगे वे उतने ही शामिल होंगे जितने इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। महोदय, संयुक्त राष्ट्र परिषद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से भी यह निर्णय लिया गया है कि 17 साल पुराने कानून में संशोधन करें और नए सुझाव लाकर नई दिशा की ओर बढ़ें। अब इसकी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। माननीय उपसभापति जी, जब से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अनेकों ऐसे काम हुए हैं जिनसे हमारा देश सुरक्षित हुआ है। मुझे याद है जब 2014 में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने से पहले एक इंटरव्यू हुआ था और जिसमें उनसे पूछा गया था कि जब कोई आतंकी ग्रुप या दूसरा देश हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो आप किस तरह का जवाब, किस तरह की कार्रवाई उसके विरुद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा, और आज जब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो रही है, ये भारत उन्हीं के तरीके से उनको जो जवाब देने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज देश सुरक्षित हो रहा है और भारत की टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इंटरनेशनल एंटी टेरर अलायंस बनाया जा रहा है। जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत अपने आप में उभर रहा है। बदलती वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत भारत बदल रहा है। सर, इन कंक्लूजन, weapons of mass destruction and delivery system amendment bill 2022 seeks to provide for provision against financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery system so as to fulfill our international obligation. The United Nations Security Council targeted financial sanction and recommendations of the Financial Action Task Force have mandated against financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery system. And this bill has been brought in this background. Sir, I would like to conclude by saying that this is a legislation which has to be passed unanimously, and I request to all the honorable members of this house to support and to pass this bill unanimously. Once again, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this important bill. Thank you very much. Thank you, Shri G.K. Vasan ji. G.V. Vasan ji. Shri G.V. Vasan ji. Sir, thank you for allowing me to speak in this bill, sir. Very unfortunate that opposition are not allowing to speak in this important bill. Yesterday, the government gave a chance to the opposition that they should also participate in this bill. Even today, they are not interested, sir. But still, sir,
I would kindly like to say, sir, the proposed amendment of this bill have given powers to the government to attach persons' properties and freeze if they do unlawful activities directly or indirectly, sir. I would also like to say, sir, India is a peace-loving country. We are the only country in the world. We are having best relationship with most of the countries, sir. Thanks to the Prime Minister and the External Affairs Minister, sir. At the same time, sir, I would like to say that we are also mighty in our army, sir. On humanitarian grounds, sir, we are the #1 country in the world, sir. Today, the Sri Lanka crisis is being managed only because of India. That has helped them in a huge way, sir. I am happy as a member from Tamil Nadu, sir. Most of the Tamil population are surviving today because of the government's initiative, sir, which is very, very important, sir. The government has also initiated a meeting on Sri Lanka and has given confidence level to the Tamil people in Sri Lanka, sir. Sir, coming to the subject, sir, I would like to say that the whole world, not only India, is concerned about mass destruction weapons which should not reach the wrong person's hands, sir. That is exactly the purpose of this bill, sir. We have also seen terrorism in many high technologies, sir, destroying human life, peace in the economy of the nation, sir. We should be aware that the terrorism should not take form in chemical, biological and nuclear way of destruction, sir. Already there is a big doubt regarding COVID-19, sir. How it came, why it came, for what purpose it happened. It's still a doubt in the people of the world's minds, sir. Sir, to conclude, the need of the hour, sir, is to prevent the functioning of terror activity. Persons who are involving in it should be punished, sir. The important aspect is envisaged in this bill in the interest of nation's security and global peace, sir. The bill will enhance India globally, sir. To conclude, sir, I am so sorry, sir. Senior members like our Ramesh are shouting in the house with different languages and spoiling the image of this house, sir. It is very unfortunate. Please address the chair. Honourable member, please address the chair. Instead, they are doing destruction in the house, sir. We should never be. Please address the chair. You, sir. Shri Ajay Pratap Singh ji, Shri Ajay Pratap Singh ji. धन्यवाद उप सभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं अपने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। उपसभापति महोदय, आज सदन में विपक्ष के आचरण को देखकर मुझे घोर निराशा हो रही है। निराशा इसलिए हो रही है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र की परंपरा रही है, इस सदन की परंपरा रही है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ विषय है, भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ विषय है, तो हम तमाम अपने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करके हमेशा एकजुट रहे हैं। मैं अपने विपक्षी साथियों को स्मरण दिलाना चाहता हूं, जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री नरसिंह राव जी थे, उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष प्रबलता से रखने की आवश्यकता थी। अटल जी से निवेदन किया, आग्रह किया और उनके आग्रह को स्वीकार करके उस शिष्टमंडल का नेतृत्व Please, no display of placards. जी ने किया। No display of placards behind the speaker. वाजपेयी जी ने उसमें ये ध्यान में नहीं रखा कि इसका हम राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। देश की
member, Shri Biswas ji, please go placards behind the speaker. सुरक्षा का प्रश्न था और पूरे विश्व को संदेश देने का प्रश्न था कि जहां पर भारत की एकता का विषय है, हम पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर एक हैं, लेकिन आज हमारे विपक्षी साथी जिस आचरण का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं, उसके कारण मुझे घोर निराशा हो रही है। सभापति महोदय, हमारे विपक्षी साथी उस भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस भारत में बम विस्फोटों की एक लंबी श्रृंखला रही है। इस भारत का शायद ही कोई ऐसा कोई बड़ा शहर होगा जहां पर आतंकवाद के कारण बम विस्फोट नहीं हुआ हो, और उस बम विस्फोट के कारण सैकड़ों में जाने गई हैं। आतंकवाद के कारण हमारे देश की सेना में सेवा करने वाले नौजवान अनेक लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी है। मैं सोचता हूं कि जो लोग आतंकवाद की बलवेदी पर शहीद हो गए, हमारे सेना के नौजवान जो शहीद हो गए, आज हमारे इन विपक्षी साथियों को आचरण देखकर उनकी आत्माएं क्या सोच रही होंगी? वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि क्या हमने इसी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है? क्या इसी के लिए हमने अपना सर्वस्व अर्पण किया है? और बम विस्फोट के कारण, आतंकवाद के कारण केवल भारत ही नहीं पीड़ित रहा है, पूरी दुनिया प्रभावित रही है। हमारे साथियों ने यहाँ पर अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था और वहां पर हजारों लोगों की जान गई थी, उसका उल्लेख किया है। आज आप दुनिया के मानचित्र पर देखें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसका उल्लेख अभी मेरे पूर्व वक्ता ने किया है। जो मध्य एशिया है वो लगातार अशांत बना हुआ है। अनेक आतंकवादी संगठन, Honorable member, Shri Biswas ji, please don't show the placard behind, please. अनेक आतंकवादी संगठनों के कारण Please, मध्य एशिया please don't show the placard, please. Honorable member, Shri Biswas ji, please don't show the placard. That's not the way. That's not the way. Please no placards behind the member. Please no placards behind the member. That's not right. हानि नहीं है। Please, Shri Biswas ji, ये आतंकवादी no placards behind the member. इसलिए है Please no placards behind the member. So that's not right. That's not right. No placards behind the member, please. Shri Biswas ji, no placards. No placards behind the member, please. Honorable members, no, 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 no. Shri B.L. Verma ji. Shri B.L. Verma ji. Ajay Pratap ji, please. Please, please, please. 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 This is not the way. This is not the way. This is not the way. Shri Abhiranjan Biswas ji, please stop the placard behind. Shri Biswas ji, this is not the way. Please don't carry the placard there. Shri Biswas ji, the placard is not required there. Please. Please. Please don't show the placard. That's not correct. That's not right. Please, Biswas ji. से होती है और जिसका अर्थ है Please. Please. इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई नहीं है और पैगंबर उसका मोहम्मद है। Please. यह देश हमारे देश की सभ्यता रही The House stands adjourned for 10 minutes. कि हम I'm हमेशा adjourning the House for 10 minutes.
एक पद,